So, hey guys, with just 6 races to go this season, Formula One has announced its next year's calendar of 24 record 24 races in 2023. So, without further ado, let's discuss the same. So, here is your calendar of 2023. It has 24 races and is quite balanced, I feel. इसके अंदर स्टैंड अलोन रेसेस भी हैं जैसे आप पहली चार देख पा रहे हैं। उसके बाद में इसके अंदर बहुत सारे डबल हेडर्स हैं एंड कुछ एक ट्रिपल हेडर्स भी हैं। इस साल हम फ्रेंच ग्रांड प्री लूज करने वाले हैं। मोनाको ग्रांड प्री वापस आ गई है टिल उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया टिल 2025। देन वी विल सी कतर ग्रांड प्री विच मिस्ड इट्स स्पॉट दिस ईयर बिकॉज ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड कप दैट वी ऑल आर वेटिंग फॉर। तो अगले साल उसने कैलेंडर में जगह बना ली है फॉर एटलीस्ट 10 years। प्लस चाइनीज ग्रांड प्री भी आ गई है वापस जो बहुत सालों से नहीं हो रही है। सो लेट्स डीप डाइव इन इट एंड लेट्स टॉक अबाउट द 2023 कैलेंडर ऑफ फॉर्मूला वन। नेक्स्ट ईयर खाली एक ही प्री सीजन टेस्टिंग होगा जो 23rd 24th एंड 25th ऑफ फरवरी को होगा बहरीन के अंदर ही। सो बहरीन के अंदर हम फरवरी के लास्ट वीक के अंदर प्री टेस्टिंग देखेंगे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। द फर्स्ट रेस इज गोना बी एट बहरीन साकिर के अंदर नाइट रेस। Then the next race is going to be a standalone race after a week's gap in Saudi Arabia, Jeddah. Bahrain और सऊदी अरेबिया काफी पास पास में है तो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग टू सी कि वो कंसेक्यूटिव रेसेस नहीं हो रही हैं। Then the next race is going to be at Australia, the Melbourne Grand Prix. So this is April's first race, and then the second race this is going to be the Chinese Grand Prix, which has provisionally made its place in the F1 calendar at least for the next year. It's going to be very interesting to see। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है बिकॉज जो गुआन यू की फर्स्ट होम रेस ग्राउंड पे होने वाली है एंड आई एम श्योर लाइक द पॉपुलैरिटी जितना फॉर्मूला वन बढ़ रहा है जिस जो स्पीड से ये जैसे जंगल में आग लगती है वैसी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एंड स्पेशली अगर एक कंट्री का ड्राइवर एक इतनी बड़ी वैसे द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड का जो एक सिंगल ड्राइवर है आई एम श्योर इट्स गोना टर्न अ लॉट ऑफ हेड्स। बहुत सारे विजिटर्स आने वाले हैं। इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग ग्राउंड प्री द चाइनीज ग्राउंड प्री। After the Chinese Grand Prix, we all fans were expecting that South African Grand Prix will return and the special circuit of Kyalami will return. It's a fantastic, amazing circuit. So we were hoping it should return, but instead it's targeting a slot at 2024. Let's see, maybe 2024 के अंदर और races हों। Let's see. By the way, ये जो calendar 24 races का हो चुका है, what do you think about it? Tell me in the comments. Do you like more races? आपको ज्यादा races पसंद है या आप चाहते हैं कि कंसंट्रेटेड रहे, कमती रेसेस रहे? बट स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी के लिए, बिजनेस के लिए, फॉर्मूला वन के बिजनेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अलग अलग रेसेस में जाएं। बाय द वे, इफ यू वांट टू नो दैट हाउ फर्स्ट द लॉजिस्टिक्स वर्क्स ऑफ फॉर्मूला वन, I can make a dedicated video on it. Second, if you want to see how the circuits business is, क्या होता है कि जो सर्किट होते हैं वो फॉर्मूला वन को पैसे देते हैं। सो सर्किट पैसे देता है एंड सर्किट टिकट बेचता है। टिकट बेच के सर्किट पैसे कमाता है एंड सर्किट फॉर्मूला वन को पैसे देता है ताकि वो वहां होस्ट करे। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो देन हाउ अदर स्पोर्ट्स वर्क्स। But yeah, if you want to know this as well, please let me know in the comments. I will create a dedicated video of it. Anyways, coming back to the calendar, we will see the first twin header coming from Baku, Azerbaijan Grand Prix to Miami in US. So this will be the twin header, the first twin header. But yes, the next race, the Emilia Romagna Grand Prix, the Imola जिसको हम बोलते हैं, तो Imola से मोनाको से बार्सिलोना, तो ये एक द फर्स्ट ट्रिपल हेडर होने वाला है, द फर्स्ट ट्रिपल हेडर दैट विल हैपन इन यूरोप इटसेल्फ। द कैनेडियन ग्रांड प्री व्हिच विल बी अ स्टैंड अलोन ग्रांड प्री, एक वीक पहले ऑफ है, एक वीक बाद में ऑफ है। देन उसके बाद हम ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री देखेंगे, फिर उसके साथ में ट्विन हेडर करते हुए सिल्वरस्टोन, प्लस एक हफ्ते बाद हम हंगरी एंड बेल्जियम ग्रांड प्री देखेंगे। इस साल हमने देखा, इनफैक्ट हर साल लगातार हम देखते रहते हैं कि भाई हंगरी के बाद समर ब्रेक आता है, उसके बाद पहली रेस होती है बेल्जियम ग्रांड प्री। बट इस 2023 के कैलेंडर के अंदर बेल्जियम ग्रांड प्री को प्रीपोन करके समर विंडोज के पहले ले आए हैं, जो जुलाई एंड में ही होने वाली है। तो हंगेरियन ग्रांड प्री और बेल्जियम ग्रांड प्री दोनों साथ कंसेक्यूटिव वीकेंड्स पे होगी। उसके 27 दिन के ब्रेक के बाद हमको नेदरलैंड्स के अंदर जैनबॉर्ड सर्किट पे रेस देखने मिलेगी with the twin header of Monza itself. So after the summer break, we will see Zandvoort and Monza.
हमको यहाँ पे फ्रेंच ग्रांड प्री देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि वो फ्रेंच ग्रांड प्री नेक्स्ट ईयर से ड्रॉप हो गई है कैलेंडर से. The next race is going to be of Singapore and Japan, where the night race of Singapore, the famous night race of Singapore, is going to take place after this year, and then we'll see the race at Suzuka. So this is going to be a twin header. So after the Singapore and Japanese Grand Prix, we will see Qatar's Grand Prix, which will not happen this year because of the men's football World Cup. So it happened. The inaugural Qatar Grand Prix happened last year, which was won by Lewis Hamilton. But now the next year is going to take place again, and it has a contract of 10 years. After that, we're going to see a triple header with the Austrian Grand Prix, which is called the US Grand Prix, then the Mexican Grand Prix, and the Brazilian Grand Prix. Three amazing circuits. Very interestingly, I particularly specifically love the Mexican Grand Prix because it happens at a very high altitude. एंड चलो ठीक है, अपन इस साल भी होने वाली तो उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे. आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट. So season finale will also be a twin header, with the first one happening at the Las Vegas and then second at Abu Dhabi at Yas Marina circuit. So Las Vegas के बारे में एक बात करते हैं. Las Vegas will be a very interesting race because first it's going to be the third US Grand Prix. Then it will happen. It's a street circuit, so it will happen on the strip. The famous Las Vegas strip पे होने वाली है race, and it's going to be on a Saturday, not on a Sunday. Plus, it's groundbreaking that Liberty Media has found a way to include the third US Grand Prix as well. Liberty Media is from US, and उन्होंने फॉर्मूला वन के राइट्स लिए ही इसलिए थे क्योंकि उनको फॉर्मूला वन पॉपुलर करना, पॉपुलराइज करना है यूएस के अंदर. आफ्टर नास्कार दे थिंक फॉर्मूला वन विल बी द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, द मोस्ट पॉपुलर मोटर स्पोर्ट इन यूएस. एंड उसकी पॉपुलैरिटी वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है इनफैक्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. बट यस, फॉर्मूला वन की पॉपुलैरिटी यूएस के अंदर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. दिस इज द राउंड अप दैट आई थिंक ऑफ द कैलेंडर. आई एम क्वाइट हैप्पी विद द कैलेंडर. There are 24 races, which for me as a Formula One fan is very exhilarating. But आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है इस कैलेंडर के बारे में? आपको क्या मजा आएगा 24 रेसेस? क्या आप चाहते हैं कि और भी रेसेस इंक्लूड हो? There are a lot of circuits in the world which are pending, and a lot of interesting circuits that can be included, like we talked about the South African Grand Prix. Unfortunately, it was not included the next year. Probably the year after that it will be included. But please tell me in comments. आप मुझे बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि इवन ज्यादा रेसें आए, प्लस इसके बारे में आपको क्या कहना है? What do you think will be your favorite race, and you'll be most excited to see the next year? So guys, that's it for this time. Please like and share if you like this video, and if you like the content, please subscribe to the channel. It will be a really help for me. Until the next video, please take care of yourself.